दिस वॉज वन ऑफ माई एक्सरसाइज आई यूज टू डू डेली। ये जितना भी 4% था, राइट, आई यूज टू गो थ्रू द होल इंट्राडे चार्ट एंड देन रिवर्स इंजीनियर एंड सी हाउ आई कुड हैव फाउंड देम। सो ये एक्सरसाइज हम लोग जो मैं कर रहा था ना, ओमिशन वाला, व्हाट आई रियलाइज्ड इज व्हाई वाज आई ओमिटिंग अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, ओके, हम्म। बिकॉज यू स्कैन ऑन एंड ऑफ डे। ठीक है, हम्म। तो जैसे हमजा बोल रहा था ना 9:15 to 10 हो गया मेरा करके। सो व्हाट आर यू आइडियली फोकसिंग ऑन द स्टॉक्स विच हैव नॉट ब्रोकन आउट, ओके, विद इन दैट 9:15 to 10, नहीं तो तुमको एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो वो तो ओमिशन में आएगा नहीं। तो जो स्टॉक्स 10 o'clock या ओपनिंग रेंज पे ब्रेकआउट नहीं हुए हैं और मिड डे हुए हैं और मैंने बिड ही नहीं डाला, बिकॉज माई अटेंशन और फोकस इज ऑन समथिंग एल्स। सेकेंड, मैंने बिड डाला है और वो ट्रिगर ही नहीं हुआ, हम्म। बिकॉज आई थॉट दैट इट वॉज द परफेक्ट पिवट और जब हिट होगा आई विल गेट इन अ परफेक्ट एंट्री, बट इट नेवर डिड। एंड ऑन सम अदर डे इट वेंट अप हिटिंग वेयर आई नेवर हैड अ बिड अपॉन। ठीक है, दिस जैसे हैपेंड टू मी विद प्राई कॉल दिस हैपेंड टू में। मी लाइक 10 times इन दिस स्टॉक। अभी सपोज मैं यहां से मूव पकड़ता हूं, ठीक है, लेट मी टेक द टोटल आइडियल ऑफ द मूव। दिस इज व्हाट रफली अबाउट 31 bars। ठीक है, हम्म। what most of the people will end up doing is if they miss this, right, they'll never be able to find an entry in the whole space। यस। ठीक है, तो हो क्या गया पता है, यू आर फाइनली फोकस्ड मोर ऑन द एंट्री rather than the momentum। Day chart is what? Day chart is giving you a context of it. But if the intraday chart does not have momentum, the day chart beyond a point is useless. या। Like a Kalyan Jewellers वाला। हम्म। करेक्ट, बट इसका मैं एंटीथेसिस बोलता हूं। अभी विक्रम सोलार जैसा है, ठीक है, द डे चार्ट लुक्स लाइक शिट, ओके, बट द इंट्रा डे चार्ट लुक्स फैंटास्टिक। सो व्हाट हैपेंस, माय प्रेजेंट इज अ लॉट बेटर देन द पास्ट, राइट। चलो इनफैक्ट कर ही लेते हैं वो जो विनर एक्सरसाइज करने वाला था, राइट, आई जस्ट शॉर्ट लिस्टेड द स्टॉक्स। सो ये जो पूरा लिस्ट है, करेक्ट, नाउ दिस वाज द लिस्ट टुडे ऑफ ऑल द स्टॉक्स दैट क्लोज्ड 4% अप। ओके। ओके, सो दीज आर द टॉप विनर्स ऑफ टुडे। ठीक है, so I've taken out the winners for right now. I'll just go one by one into those. ठीक है, I'm asking you two questions. Whether we could have identified it previously, मतलब could we have identified it before the morning, before the open? One. ठीक है, if no, could we have identified it in any way during the day and entered it? I'm not talking on how to scan about it. ठीक है, we'll reverse engineer a scan if needed. ठीक है, बट कैन वी डू इट काइंड ऑफ, इनफैक्ट आई एम जस्ट डूइंग इट राइट नाउ, आई यूज्ड टू डू दिस एक्सरसाइज। ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, सबसे पहले ये, कुड वी हैव टेकन दिस इन एनी वे, ये स्कैन में भी आता? नो, राइट, कंप्लीटली डेड। वी वुड हैव रिजेक्टेड क्योंकि अर्निंग्स के बाद इतना बड़ा गैप डाउन किया उसने। सो इट्स कंप्लीटली ऑफ, करेक्ट, गैप अप भी नहीं है, सो तुम्हारे प्री ओपन में भी नहीं आता कुछ ज्यादा। करेक्ट, नाउ if I actually go on to the 5 minute, see how linear it is. This is the perfect looking intraday chart. यस। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ योर विनर्स इफ दे आर एक्चुअली गुड, राइट, जो एकदम बड़े बाल्स देते हैं ना, लाइक योर बिग ब्रेकआउट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम विल हैव वेरी स्टैंडर्ड इंट्राडे पैटर्न्स आल्सो। ठीक है, द बेस्ट पैटर्न इज दिस विच हैज लिटरली ब्रोकन आउट फ्रॉम द ओपनिंग रेंज। तो ये जो था ना प्रैक्सिस, इट हैज नेवर ब्रोकन द येलो लाइन। या। करेक्ट, द मोस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ योर इंट्राडे चार्ट्स एंड अप लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, अभी अगर मेरे को इसको आइडेंटिफाई या स्कैन करके आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, हाउ डू आई डू इट? मोस्टली 4% ब्रेकआउट इज कैन यूज सकता है इसमें। या परफेक्ट। और सो इवन इफ यू हैड अ 2% ब्रेकआउट क्योंकि या टू वॉल्यूम बार परसेंट बहुत हाई है, इफ यू हैड सॉर्टेड बाय आर वॉल, तो दिस माइट हैव स्टार्टेड शोइंग अप क्विकली। सो व्हाट पीपल एंड अप डूइंग इज द मोमेंट दे गो लेटर इन द डे द परसेंटेजेस कीप ऑन इंक्रीजिंग टू एन एक्सटेंट। हम्म। ठीक है, तो अगर सपोज मैं यहां से लेता हूँ, राइट, सपोज यहां से ओपन हुआ, इफ आई टेकन एन एंट्री है, दिस कम्स इन अ परफेक्ट 4% स्कैन। या। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, प्रैग व्हेन यू आस्क्ड, राइट, अभी जब मैं 4% स्कैन पे देख रहा हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस पिवट, because the moment I get on a daily chart, I'll reject it. And this will be both on both sides, on the downward side also, on the upward side also. So here I'm just playing the day chart. या। Correct. अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ which I have been loving to show over the last few days. This one, because this was a very cool coincidence.
यू सी these breakouts, ये जो 3 दिन आया, Hmm. ठीक है, दिस वॉज 3rd of June, इट स्टार्टेड ऑन, हाँ 3rd of June वॉज दिस, आई टेक इट हियर। तो जैसे हम लोग ईपी में ले रहे थे ना टाइप ऑफ एंट्रीज वाइज, ठीक है, इफ आई जस्ट एक्सटेंड द लॉजिक फ्रॉम देयर, ठीक है, ये देखो, दिस इज द 3rd of June where the actual momentum started, ठीक है, दिस वॉज द गैप अप, ठीक है, उसके बाद देखो द 2 days हियर कंसोलिडेट, ओके। अभी हमजा जब तुम पूछ रहे थे ना यहाँ पे सवाल कि उस हाँ दिन का तुमको अगर फ्लैग लेना है तो क्या करोगे करके, नाउ इफ यू सी दिस डे, तुमको तुमको यहाँ पे भी टेम्प्ट होगा, यहाँ पे भी टेम्प्ट होगा टू एन एक्सटेंट, यस करेक्ट। I'll go on this day, see on the 5th of June. Yeah. Lot of EP pullbacks right now are in this position. एक दो दिन का Exactly. pullback. LN is like that. Yeah. Now अभी आज हमजा TD see, power वैसा था. हाँ now see this, I'm taking the whole pullback day यहाँ से 3rd to 5th, ये देख रहे हो, you really see little no momentum in the day ना, Hmm. तुम्हारा start is also weak, then it is basing, not doing anything over the day, Hmm. करेक्ट, बट ये डेली चार्ट में तुमको बहुत अच्छा लगेगा, Hmm. ओके, बट द इंट्राडे चार्ट विल एंड अप सकिंग ऑन दिस, ठीक है। नाउ लेट मी टेक द नेक्स्ट डे, ठीक है, सी this kind of is within the same range, gives out a decent enough start, but then starts breaking out midday, ठीक है, and then is linear for the whole day, ठीक है, see this, Yeah. ठीक है, then see the next day after that, gives you a very strong start, moves Hmm. only in the first half an hour 1 hour, ठीक है, and then is dead over the whole day, Yeah. ठीक है। थर्ड डे देखो, इट एक्चुअली ब्रेक्स आउट फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग रेंज, देन इज Yeah. लीनियर फॉर द होल डे, ठीक है। इफ यू एक्चुअली सी इंट्राडे पैटर्न्स, राइट, विनर्स के, very coincidentally this literally came back to back, these three are very common intraday patterns also, ठीक है, it will give you a stronger start in the first half an hour 1 hour, ठीक है, then base, and the whole day range is not over, ठीक है। तो अगर मैं ये 10 बजे स्कैन कर रहा हूं, सो व्हाट विल आई एंड अप डूइंग, समथिंग लाइक अ विक्रम सोलार, ठीक है, Hmm. which I am looking, it has given a strong start, but has not gone up so much for me to finish off the whole day. So अगर मैं यहां पे लेता हूं दिस बार, या अगर 1 मिनट पे सपोज चाहता हूं, ठीक है, सी दिस, परफेक्ट, इट गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड देन इट गिव्स यू परफेक्ट बेस, ठीक है। दीज बिकम वेरी गुड फॉर 10 o'clock स्कैन फॉर एग्जाम्पल। तो जब आप पूछ रहे थे ना अभी, अगर 10 o'clock अगर मेरे को स्कैन करना है, व्हाट आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स आई एम लुकिंग फॉर, द स्टॉक्स विच हैव broken out, okay, but have not broken out so much that my day range completely gets exhausted, one kind of, ठीक है। second kind of stocks में भी जो which I am say previously bullish upon, ठीक है, which look good on the daily chart but have not opened very strong, gap up हुआ है या रिवर्सल हुआ है, and I can expect a reversal from there, ठीक है। two Okay. kind of stocks that I look at say 10 o'clock, But you're okay with the first type where the daily chart might be shit. हाँ, You don't care. क्योंकि यहाँ पे क्योंकि फर्क आज समझे, 4% ब्रेकआउट हो गया है या 3% ब्रेकआउट हो गया है. because there's something within the day, right? उससे रैंडम नॉइज बहुत नहीं ऐड होता सिस्टम में. नहीं, सो टू वेज, अभी देख, टू Today, for वेज, example, there will be some 100 stocks which will come in some 2% scan or something like that, right? हाँ, so you don't take all the 2%, no, you can't take in all to 2%. Yeah. So what will you sort by? The percentage change for the देखो first ये, scan. अभी देखो, अगर बहुत सा परसेंटेज लोगे तो ऊपर के जो तुम्हारे 10-15 स्टॉक्स है, दैट विल बी लाइक 12-15% अप, which will anyway They get have off. already finished the day's So the range. meat of it comes somewhere in the middle of the list, ठीक है, Hmm. say the 20 to 80 वाला list, बीच का list, okay। वहां पे now you prioritize on two things, okay। One is how is the stock looking, one, if it is fitting both on the daily chart also, intraday chart also, it has given you a purple patch, okay। Yeah. Many a times the stock intraday may look very well, okay, and it may look okay on an average, मतलब अभी जैसे this is a very typical bottom bounce chart, Hmm. ठीक है। अगर मैं ये इसको एक्चुअल पकड़ूं, दिस वाज एक्चुअली अ ब्रूटस, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मोमेंटम टू कम एट ऑल, Yeah. ठीक है। तो अभी मैं देख क्या रहा हूं ना,
am I getting a good entry pivot to buy into the momentum of the day or not? ठीक है. Got ये it. जब स्टॉक भी वो जो ले रहा था ना 4% burst or day burst, this is exactly what he was actually looking at. Hmm. I realized later. ठीक है. अभी आगे जाते हैं. Anurag, Yeah. so you're saying, but I mean, this is one of the things which I experienced because I was trying to do the intraday thing. Jahan pe I was looking for this strong sort of initial burst. And then it forms a small base, yeah, inside candle type ka chota sa red mila. And then some of them zoom off from there. ठीक है. But for a lot, it keeps failing also. So you're saying if it looks great on the daily chart, it's an additional plus. Like that is what you should also look at as context. Exactly. So कभी कभी आता है सम में. अभी अभी ये वाला चार्ट देख लो. ठीक है. हाँ. इट इज अगर यहाँ पे देखते हैं, आई शो यू द इंट्राडे चार्ट. ओके. एब्सोल्युटली परफेक्टली लीनियर. Yeah. ठीक है. लैमिनेट कर सकते हो. ओके. नाउ इमेजिन इफ यू स्कैन एट से 10 o'clock, you'll see say something like this. ठीक है. You scan at 11, you'll see this. You scan at 12, you'll see this. ठीक है. It is showing a good base on base. ठीक है. Hmm. और 392. बट जब तुम डेली चार्ट पे डालोगे तुमको ये बात यहाँ पे दिखेगा. Hmm. करेक्ट. अभी तुम क्या एंटिसिपेट कर रहे हो? इज इट लुकिंग एनीथिंग ऑन डेली? इट इज लुकिंग कि भाई यहाँ पे गैप डाउन होके और ये रिवर्सल होने जा रहा है. Yeah. Okay, you can never fit in a pattern here. What you're doing here is, this is what stock in play is ideally. ठीक है. यहाँ पे is there additional money coming in the day despite whatever the day chart is actually telling you? Because Yeah. the guy who is putting in the money today, correct, is creating two things. Either it's an initial momentum. जैसे विक्रम सोलार में अभी तक कुछ नहीं था. The someone has found value in that and has started putting money on day one itself. One kind of it. ठीक है. Hmm. सेकेंड में भी फॉलो थ्रू मोमेंटम लाइक हाउ वी सॉ इन कार्टरे. Right. ठीक है. तो अभी बहुत बार ऐसा पूछा था ना प्रयाग, अगर एक्सटेंडर है मेरे को लेने का डर लगता है करके. ठीक है. सो लेट्स टेक समथिंग लाइक दिस. Rubicon is old. ठीक है. सी दिस. ये पूरा स्क्वाट हो गया. ठीक है. वर्क्स फॉर द डे टू. Hmm. ठीक है. सी दिस kind of a decent pivot. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? You see this is the first initial range in itself is slightly higher. Hmm. Correct. तो उसके कंपैरिजन में if you see what am I actually doing? I'm waiting for the initial momentum to come, create an initial pivot and then take it. Yeah. Yeah. तो अगर मेरे को मनोरमा जैसा स्टॉक्स लेना है, I'll have to get into the first half an hour or the first 15 minutes. But Vikram Solar kind of stocks, जब डे चार्ट्स आता है ना, the stocks which are so linear during the day, Hmm. these are the best stocks for an intraday. Hmm. क्योंकि आप कहीं पे भी स्कैन करोगे, you will find some kind of a persistent momentum on the day level. Hmm. Makes sense. Correct? सिद्धार्थ, जब आप पूछ रहे थे राइट ऑन द इंट्राडे, इज दिस गेटिंग क्लियर? Yes, yes. ठीक है. सो व्हेन आई एम लुकिंग एट स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स, राइट, द स्टॉक्स व्हिच आर देयर इनटू योर वॉच लिस्ट, देन लुक एट दीस. अभी जैसे आजाद है फॉर एग्जांपल, Correct. आज ही लेता हूँ आजाद का. ये देख. ठीक है. अभी थर्ड डे तो एक्सटेंडेड लग रहा है. यहाँ पे तो लोगे नहीं. Correct. ठीक है. क्योंकि द मोमेंट यू सी दीज टू बार्स, यू विल मोस्ट लाइकली एलिमिनेट इट. Yeah. Right. Yes. ठीक है. I take it on the 5 minute. See this. It gave you a very good pivot here. Hmm. ठीक है. Now the thing is, the moment I take in the intraday chart, no, it looks good. The moment you see it on the day chart, it's gone. So what are you ideally playing on, just Siddharth, is the day momentum. Now there's a con to this for particularly you. Okay. On the overall picture, ठीक है, this may still be extended. Yeah, yeah. Next day it might fall and hit my. Exactly. So this I end up playing like a velocity. Yeah, yeah, correct. Velocity or the hybrid velocity. That I have faced this CPC limit where whenever I've tried intraday, like I buy intraday, but I keep my stop loss like intraday, but my objective of the trade is sort of holding it for a swing or a positional. That is where it hits the stop loss. So that is, I think that is one problem that I need to fix. ठीक है. Yeah. See this. I'm just going through stocks one by one. See this. Very similar, very linear during the day. ठीक है. Yes. फिर breakdown हो जाता है, then goes flat.
ठीक है, ये रूबिकॉन मिस कर दिया, राइट? सी दिस यू जस्ट कांट प्ले, दिस इज डेड, सो यू इग्नोर। ठीक है, इसको कुछ भी करोगे स्कैन में क्या करोगे? अगर यहाँ से रिवर्सल तुम हमजा जैसे प्ले कर रहे हो तो कर सकते हो, बट दिस इज अनदर काइंड ऑफ स्टॉक। ठीक है, नाउ दिस लुक ग्रेट ऑन एन इंट्राडे, सॉरी लुक्स वेरी गुड ऑन अ डेली। Damn. ठीक है, बट सी द इंट्राडे इज अ रिवर्सल। ठीक है, देखो ये देख लेता हूँ, सी दिस, ये देख रहा, नाउ ये है इलिक्विड, बट सी हाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू से विक्रम सोलर। ठीक है, दिस इज नॉट वेरी लीनियर, बट इट हैज गॉन एंड देन गिविंग यू अ बेसिक, दिस लाइक दैट कार ट्रेड का डे वाला। Hmm. क्या अनुराग, ये वाला जो है ना, I'd probably get stopped out. I mean, जो फर्स्ट बेस हुआ था उसमें, ये right, just somewhere between that, ये हाँ, प्रॉब्लम है कि 10 ये है रुपए। ही इलिक्विड, सो मोस्ट लाइकली यू, ये जैसे ये दिख गया ना, आई वाज ऑफ। नहीं नहीं, उससे पहले जो एक छोटा सा बेस बना है ना, ये वाला, so if I took on the break of like HOD, like high of day का break, and my stop is at the low of that base, I've been stopped out on stocks like this. क्योंकि ये इलिक्विड है बहुत, इसके लिए। इसीलिए, अगर तुम अच्छा, बहुत इलिक्विड स्टॉक्स पे जाओगे ना डे पे, ठीक है, हाँ, ये रैंडम मूव्स बहुत आएंगे। राइट, जैसे आई शो यू वन, आज ही ये देख रहा था, आई हैड टेकन इट ऑन द इंट्राडे। ठीक है, सी दिस वाज शैडो फैक्ट्स। ओके, हम्म, हम्म, सी डे पे ठीक लग रहा है, हम्म, decent enough of basing. Okay, yeah, when I took it on the 5 minute, I saw this, ये भी अच्छा लग रहा है देख के। हम्म, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 260 के आसपास यहाँ पे अपना बिड डाला था। ओके, हाँ, सी द अगलीनेस इट क्रिएटेड। ठीक है, इट वेंट अप, यहाँ पे मेरा फिल हो गया, इमीडिएटली अगले मिनट टॉप आउट हो गया। yeah, ठीक है, सो इफ यू गो इनटू वेरी इलिक्विड स्टॉक्स यू विल फेस अ प्रॉब्लम। okay, okay, got ठीक it. है, मोस्ट लाइकली क्या होगा, विक्रम सोलर इज ऑल्सो डिसेंट एनफ साइज्ड कंपनी इफ आई रिमेम्बर। या, ठीक है, तो कहीं कहीं पे यहाँ पे लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इफ यू गो इन विद साइज ऑन एन इंट्राडे चार्ट, इवन इफ इट इज ट्रेंडिंग यू विल फेस अ लॉट ऑफ स्पाइक्स, वो प्रॉब्लम है। ये मेरे साथ बहुत हुआ है, and even though I was looking at consolidation in strength, not, I eliminated the weakness वाला part, but फिर भी बहुत उसमें कटा है। या, इसमें सर एक चीज ऐड करूं इसमें यूटीएल सोलर वाली ट्रेड में, बोलो ना। ये जो ऋषि जी ने स्टॉप लॉस लगाया है बेस के नीचे, आई थिंक ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ है कि इज ट्रेडिंग इट लाइक एन ईपी नॉट डे लोज, कि मतलब अगर आप डेली पे देखो तो आप अगर डे लो का स्टॉप लॉस लगाते हो तो स्टॉप आउट नहीं होंगे, बट आप बेस के नीचे लगा रहे हो, प्लस ये है भी इलिक्विड, और Yeah, ईपीज में तो वो वर्क कर भी जाता है बिकॉज वो फोमो प्लस अर्जेंसी रहती है, एंड वी आर ट्रेलिंग इट वेरी फास्ट। तो जब आप बेस पे लगाओगे तो कुछ मतलब, ये मेरे साथ लास्ट क्वार्टर हुआ है काफी स्टॉक्स में कि मैं ईपीस की तरह बेसिक हम्म, स्ट्रक्चर स्ट्रेट कर रहा था कि बेस के हम्म, नीचे लगा दिया, ये टूटा तो क्रैक हो जाएगा, बट डेली में इंडिया में इतनी फ्लक्चुएशन होती है कि वो डे लो तो शायद नहीं तोड़ेगा, बट वो आ सकता है नीचे ना, आप ये बेस तोड़ सकता है, या, लिक्विड हो सकता है। सेम गोज विद सनसेरा एंड एवरीथिंग कि उसमें बहुत अच्छे हम्म, अच्छे बेस बने, बट इट गॉट ब्रोकन, बट वो नेक्स्ट डे फिर चल गया। right, okay, चलो, हाँ, सी दिस अगेन, आज आज इसका रिजल्ट था क्या, सी इट गैप्स डाउन। ठीक है, एंड देन रिवर्सेस। ठीक है, अभी रिजल्ट्स आ ये, रहे हैं सर अभी भी? हम्म, सॉरी सॉरी कंटिन्यू। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे हम तो? मैं कह रहा हूँ रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी भी। नहीं, आज लास्ट था ना। अच्छा। नहीं ठीक है। मतलब जो तुम्हारे फ्राइडे शाम को आए होंगे, वो आज उसका इफेक्ट आया होगा ना, इसलिए ज्यादा नहीं था आज, मतलब 10-12 ही कुछ थे, नॉट मच। ठीक है, नाउ सी दिस दालमिया शुगर से सी दिस इज अ काइंड ऑफ एन ईपी, ये डेली में तो मोर अनलाइकली आता, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5 or 10 minutes। हम्म। ठीक है, नाउ सी इट वेंट अप, गैप्ड अप एंड देन स्टार्टेड बेसिंग। ठीक है, दिस कैन अगेन बी लाइक अ डिमांड पॉज काइंड ऑफ अ सेटअप।
यस ठीक है बिल्कुल। तो आइडियली ये जो विनर वाला एक्सरसाइज कर रहा था ना, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू अ लॉट बिफोर। तो जो ओमिशन वाला मिस्टेक था ना, जो प्रयाग बोल रहा था, ठीक है, दिस वाज वन ऑफ माय एक्सरसाइज आई आई यूज्ड टू डू डेली। ये जितना भी 4% था, राइट, आई यूज्ड टू गो थ्रू द होल इंट्राडे चार्ट एंड देन रिवर्स इंजीनियर एंड सी हाउ आई कुड हैव फाउंड देम। So I found basically broadly two or three scans only. या तो 10 o'clock के आसपास एक परसेंटेज स्कैन डाल दो, 12 बजे एक डाल दो, 2 बजे। दैट वर्कड द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर मी, वन। ठीक है। सेकेंड, once you start doing this daily, right, you'll start recognizing how the day patterns are looking like. This kind of a Vikram Solar kind of a pattern, you'll more or less see every day happening. ठीक है। Goes up, flag, goes up, flag, goes up, flag. तो ये बहुत लीनियर है ना। दिस इज द मतलब, अगर किसी को लिटरली अगर 10-15% ऊपर जाना है, इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ gyrations anyway. So Yeah. the stock is going to end up looking this way. Only the rate of change will keep on differing. ठीक है। अभी जैसे ये भी लेता हूँ, सी दिस। सो ये जो रेट ऑफ चेंज आएगा ना, व्हेन इट स्टार्ट्स टू गेट लीनियर, ओके, सो व्हाट एम आई लुकिंग एट, एट व्हाट पॉइंट इज इट गेटिंग लीनियर? नाउ इट मे गेट लीनियर विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर एंड देन गो डेड। ठीक है, दैट इज वेयर वी कैन ओनली प्ले इट इन द ओपनिंग रेंज। Second way is it can dead go linear, say somewhere in the midday here and then go up. ठीक है। Now if I want to identify this stock, मैं ज्योति लैब कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? डे चार्ट में तो आएगा ही नहीं, इट इज डेड। ठीक है, चांस ही नहीं है। बट आई एम सीइंग अ neglect एंड देन सीइंग अ सडन मोमेंटम इन द डे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ, प्रोबेबली दिस में कम अप इन द 12 o'clock स्कैन। ठीक है। सो मोर और लेस इसमें एंट्री भी क्या आएगा ना, एंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू डोंट नीड टू बी वेरी क्रिएटिव, इट विल बी अ वेरी सिंपल बेस ब्रेक इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और इफ इट इज वेरी लीनियर, इट में जस्ट एंड अप बीइंग अ पुल बैक एंट्री। अभी ये जैसे अगर विक्रम सोलार लेता हूं, ठीक है, दिस बिकम्स अ गुड एंट्री, यहाँ पे इट्स अ वेरी गुड एंट्री। एंड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स व्हेन इट इज लीनियर एनफ, यू विल मतलब फेस अ मतलब स्मूथ एनफ मूव इफ इट हैज टू वर्क। ठीक है। तो वेलोसिटी ट्रेड्स का ये एक्चुअली क्यों ले रहा था, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस टू आइडेंटिफाई अ वेलोसिटी। आई थिंक इसमें सबको असाइनमेंट देना चाहिए कि एक हफ्ते बस डे ट्रेडिंग करो, क्योंकि इंट्राडे चार्ट सीम टू बी सो क्रिटिकल ना, नॉट ओनली फॉर एंट्री बट आल्सो फॉर midday entries, right? Like all of my stocks, I keep staring at them, but because I'm not so focused on intraday stuff, all my triggers are defined at day level. हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है? नाउ से समथिंग लाइक ये जैसे पूछ रहा था ना हमजा कल्याण का। ठीक है। नाउ सी दिस लुक्स वेरी गुड, राइट, दिस हैज गिवन यू द परफेक्ट पिवट, बट इट हैड गिवन यू द परफेक्ट पिवट यस्टरडे आल्सो। Yeah. ठीक है। तो बहुत बार मेरा होता क्या था, यू एंड अप टेकिंग ऑन पिवट्स बट यू एंड अप गेटिंग स्टक ऑन दीज डेज। सो इवन इफ आई हैव टू एंटर, वेयर डू आई एंटर? अगर मैं यहाँ पे डे हाई लेने जाता ना, इट वुड बी द मोस्ट स्टूपिड एंट्री बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग एट इट। Yeah. ठीक है। देन आई वुड रादर गो ऑन एन इंट्राडे चार्ट एंड सी वेदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मोमेंटम कमिंग इन हियर। इफ आई एम वेरी एंटिसिपेटिव तो यहाँ पे आएगा, बट दिस बिकम्स अ परफेक्ट एंट्री टू टेक इन। सर अगर गैप डाउन रिवर्सल हो रहा है तो फिर आप जो ओपनिंग प्राइस था जब वो रिकवर हो रहा है तो आप वहां भी ले सकते थे, है ना? जैसे यहाँ ये पे रेड बोल बार दो है क्या? ना, आई थिंक 915 की है ना रेड बार ये। हाँ, दिस वन, यस। या यस, बट आई अगर नीड इफ टू यू बी विद इन, मतलब माई ये स्टॉक यहाँ पे लेने के लिए आई नीड टू हैव अ प्री डिटरमाइंड बायस। हाँ वो तो है, ठीक है। द वो थिंग इज, चाहिए। अभी होगा क्या पता है? अभी बहुत स्टैंडर्ड होगा ना, एवरीवन विल लुक एट दिस एंट्री। यस। ठीक है। नाउ अगर मैं एक्चुअली होलसेल वर्सेस रिटेल पकड़ू, दिस इज एक्चुअली द रिटेल एंट्री, राइट, दिस इज द वर्स्ट ऑफ द रिटेल एंट्री। परफेक्ट। यस। इसमें सर अगर ये गैप अप खुलता है तो इसमें भी मैंने जैसे जो ये टाइट पिवट होते हैं इसमें मैंने एक मॉडिफिकेशन करी है अपने लिए कि अगर ये गैप अप खुलता है तो आई विल टेक 3 मिनट का हाई या 5 मिनट का हाई, जिससे मेरे को रिटेल की अगर एंट्री जैसे 3 से 5 में फेल हो जाती है। बेसिकली हमजा, तुम कोई भी मिनट हाई लोगे, यू आर जस्ट गोइंग टू हाँ हाँ स्टिल हाँ वेट फॉर एन एंकर पॉइंट। हाँ हाँ ऑब्वियसली।
ठीक है, दिस एक्चुअली इज अ बैड एंट्री। अगर 1 मिनट यहाँ पे इज वेरी बैड, दिस यहाँ पे टाइटनेस और एंकल तो तुम्हारा ऑलरेडी आ गया ना, हाँ आ गया। यू वुड एक्चुअली वांट टू टेक इट हियर। नहीं और वो यहाँ कहने का प्रॉब्लम मतलब, क्या पता है, यहाँ पे लोगे ना, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रूम टू गो ब्रेक इवन। या यहाँ पे तो दैट्स यू ट्रू। आर डेड। फर्स्ट मिशन इज टू जस्ट गो ब्रेक इवन। हाँ, दैट्स इट, कि यहाँ पे लोगे तो पक्का -1 आता नहीं वो कहने का ये था कि जैसे रिटेल की अगर एकदम से बाइंग आती है और गैप अप हो रहा है, तो वो गैप अप रियल है या नहीं, तो थोड़ा लेट बाय कर सकते हैं। है। बट या ये है कि कंफर्मेशन मिल जाए कि करेक्ट, रिटेल एंट्री नहीं है। करेक्ट, राइट। तो सी दिस योर परफेक्ट वन। ठीक है, जो एक्सटेंशन बोल रहे थे ना, सी थर्ड डे। Hmm. ठीक है, यहाँ पे नहीं लोगे एक्सटेंडेड है करके। Yeah. Okay, let me go to the day chart. See, this is your 1 minute, first 5 minute. Okay, this bar, and then see how linear it is. This linearity is common across winners कि ये कुछ हमें like this is And, very and, surprising, and, right? and you Because know, I was so surprised that no one talks about this on the day chart. yeah, like my imagination is कि बहुत ऊपर नीचे जाता होगा, कुछ भी randomness होता होगा at intraday level, right? 1 minute पे. अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं ना, see this, linear. Yeah. Oof. डे ट्रेडिंग ही करना शुरू करना चाहिए ऐसा देख नहीं, बट I'll tell you the rider. Okay, lot of the stocks, ये तो हम लोग winners देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे सर्वाइवल बायस भी है ना। हाँ हाँ Yeah, but the point is the odds are still into your favor. Because even when when you do this daily, right, you'll be able to identify whether that linear is really or linear by the time you are at 10 a.m. or 11 a.m. exactly, yeah. So if it is linear till 11 for example, Yeah. why will it suddenly become choppy at 12? अभी ये जैसा है, ये मैं क्यों ही देखूंगा? Yeah, I will never look at it over the day, right? yeah. ठीक है, अभी हिंड कॉपर ले लेता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल, लुक्स परफेक्ट। Hmm. ठीक है, अभी अगर मैं डे चार्ट पे देखने जाओगे तुम ये देखोगे ही नहीं। Hmm. और ईपी डे पे है तो तुम्हारा ये गैप अप इज ऑल्सो नॉट सो बिग, सो इट वोंट इवन कम इनटू योर रडार। ओके, Hmm. बट द डे चार्ट ऑफ इट लुक्स परफेक्ट। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज हम लोग जो मैं कर रहा था ना, ओमिशन वाला, व्हाट आई रियलाइज्ड इज व्हाई वाज आई ओमिटिंग अ लॉट ऑफ स्टॉक्स। ओके, Hmm. बिकॉज यू स्कैन ऑन एंड ऑफ डे। ठीक है, Hmm. तो जैसे हमजा बोल रहा था ना 9:15 to 10 हो गया मेरा करके। ओके, Hmm. so what are you ideally focusing on? The stocks which have not broken out, okay, within that 9:15 to 10, नहीं तो तुमको एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो वो तो ओमिशन में आएगा नहीं। ठीक है, Hmm. तो जो स्टॉक्स 10 o'clock या ओपनिंग रेंज पे ब्रेकआउट नहीं हुए हैं और मिड डे हुए हैं और मैंने बिड ही नहीं डाला, बिकॉज माई अटेंशन और फोकस इज ऑन समथिंग एल्स, वन। Hmm. सेकेंड, मैंने बिड डाला है और वो ट्रिगर ही नहीं हुआ, Hmm. बिकॉज आई थॉट दैट इट वॉज द परफेक्ट पिवट, और जब हिट होगा आई विल गेट इन अ परफेक्ट एंट्री, बट इट नेवर डिड, एंड ऑन सम अदर डे इट वेंट अप हिटिंग वेयर आई नेवर हैड अ बिड अपॉन। Yeah, yeah. ठीक है, This जैसे happened to me with Pry call. दिस हैपेंड टू मी मैं लाइक 10 times in this stock. And, ये वाला, ये जो था ना, सी दिस। ठीक है, यहाँ पे हर जगह कहीं ना कहीं पे तो टाइटनेस दिख ही रहा था ना, सम ऑफ द अदर yeah, विल कीप ऑन एंटिसिपेटिंग, जिस दिन टूटा उस दिन बिड नहीं है। yeah. ये सर 2 SL दिए हैं इसमें ही ना, और जिस दिन टूटा उस दिन खरीदा ही नहीं। हाँ, ऐसा बहुत कॉमन होता है, ये देख, कौन सा प्रिकॉल बोल रहे थे ना हाँ, ये। pre-call. Like हाँ, this 4 days ago मेरा सारा ट्रिगर ऑर्डर सब सेट है बट जस्ट डिडंट ट्रिगर आई वाज लाइक ठीक है वैसे भी छोटा सा एंड व्हाट विल हैपन कंफर्मेशन अगर ये 5 मिनट बहुत जल्दी भाग गया ना, ये यू भाग गया राइट हाँ सो लाइक विल बाय मिस द इट टाइम 100%। या आई एम ठीक है, लाइक अभी ये डूड मिस हो गया प्रयाग। नाउ द प्रॉब्लम इज, इफ यू मिस दिस राइट, आगे का 3 दिन तो ऊपर भागा ही है ना, यू वुड हैव सम ऑफ द अदर एंट्री पॉइंट, या but you would keep on staring at the daily and wait for an entry. exactly I think one of the wrong assumptions in my current entry method is that I have to find the low of the swing which is this first green bar in this swing right Yeah, and yeah, if I miss this then discard the stock look at something else but what right. you are now saying ki like there are between this first low point of the swing to day 2 day 3 tak there are like probably 4 other entries or 5 other entries if you go to the intraday chart This is very similar to the question जो नीलेश जी ने पूछा था, if you remember in the cohort, कि भाई अगर मैं बेच दी और बायबैक कैसे करूं करके, वो वाला क्वेश्चन hmm. था ना। नाउ से कौन सा ले रहे थे, आई थिंक आई हैड गिवन दिस एग्जांपल। Just,
ओके नाउ सी समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे तो सबको एक्सटेंडेड दिख ही रहा है, ठीक है, वेरी इजी टू गेट एक्सटेंडेड, ठीक है, Yeah. द ऑब्जेक्टिव इज ईपी, सो आई शुड आइडियली नॉट बी सेलिंग इट, Yeah. ठीक है, so what I'm doing is I'm selling it, okay, but then I'm not waiting for an ideal entry point to enter, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था ना, यहाँ से अगर यहाँ पे द मोमेंट ये कंटिन्यूअस फॉल होते गया, करेक्ट, Hmm. द मोमेंट द डे इट वुड हैव रिवर्स्ड, अगर यहाँ से भी अगर सपोज रिवर्सल आ गया होता ना, आई वुड हैव टेकन द सेम साइज बैक, Hmm. I'm thinking is 800 पे बेचा, even if I get back at 50, it is still a averaging of cost, right? Yeah. Problem where we miss up the entry is when we think कि भाई इतना perfect pivot आना चाहिए, फिर मेरे को वो perfect entry point आना चाहिए, तभी मेरा दी entry होगा, Hmm. ठीक है? In this the objective was just not to miss the position. तो अभी जो तुम बोल रहे थे ना, suppose if I'm really bullish on Molpen, ठीक है, तो सिद्धार्थ when you are saying right for your investor bet what everything looks extended, ठीक है, if I'm really bullish on Molpen, even if I miss this thing, ठीक है, can I still find out a velocity trade somewhere or the other? Yeah, no, so one stock I am actually bullish on and I don't have a position in it is in Swift, IND Swift. हम्म, इसको भी क्या 5% ट्रिगर है पर डाला, सिद्धार्थ अभी जी, तक बता तो दो। बच गए अभी तक ये, हाँ ठीक है, हाँ या इसमें नाउ अभी सिद्धार्थ यहाँ से विजुअलाइज कर, सपोज इट स्टार्ट गोइंग अप टुमारो इटसेल्फ, it should most likely look like a Vikram Solar or something, sorry, what is ठीक है, now the point is for your objective when you're playing it for an investment bet, right, ठीक है, it is still going to pull back, so you need to adjust the accordingly, correct. execution accordingly. So that's the actually that's वही है कि उसके लिए that's like last time UFBL was one. I was waiting for a pullback. It sort of gave us it gave a pullback like this and then it just went right. So वो double ही हो गया वहां से. नहीं देख, ट्रेडर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, आई टेल यू वेयर द एंट्री या वेलोसिटी का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, अभी सपोज मैं यहां से मूव पकड़ता हूं, ठीक है, लेट मी टेक द टोटल आइडियल ऑफ द मूव, this is what roughly about 31 bars, ठीक है, what most of the people will end up doing is if they miss this, right, they'll never be able to find an entry in the whole space, Yeah. यस, ठीक है, तो हो क्या गया पता है, you are finally focused more on the entry rather than the momentum, Yeah. correct, what are we doing in this exercise when we are doing on the 4% bar, ठीक है, we are focusing on the day chart, right, okay, sorry, on the intraday chart, correct. Day chart is what? Day chart is giving you a context of it. But if the intraday chart does not have momentum, the day chart beyond a point is useless. Yeah. Like a Kalyan Jewelers वाला, correct. But इसका मैं antithesis बोलता हूँ. अभी विक्रम सोलार जैसा है, ठीक है. The day chart looks like shit. Okay, but the intraday chart looks fantastic. Correct. So what happens? My present is a lot better than the past, right? Yeah. Correct. Yeah. In fact, what I've also realized is when you focus too much on entry, it's easier to get into the slow and dead stocks. क्योंकि बहुत बहुत आसान एंट्रीज मिल जाएंगे तुम्हें, राइट, वो कुछ कर ही नहीं रहा है क्योंकि वो सब टाइट राइट. होता है. हाँ, Without HSCL moment. फॉर एग्जांपल, राइट, मैंने इतने सारे एंट्रीज ली, कुछ ज्यादा लॉस नहीं हुआ, but didn't give me anything also, right? Whereas like the fastest movers will always make it very difficult to get a good entry. Exactly. But if you're doing it this intraday, then you have so many more opportunities to like Perfectly fine. do something. तो अगर मैं ये कर रहा हूँ ना, just do this, ठीक है, because you are doing the omission वाला exercise, I thought I'll take this again. तो हर दिन है ना, see this top 4% winners. You'll see a Yeah. lot of linear stocks which you could have identified. See this? Yeah. Now the I think the biggest thing it will solve, forget intraday, is like just for like these EP pullbacks, there is no reason to miss an entry now, right? Because if the chart is telling you this is a good stock, okay. even if पहला डे भी मिस हो गया, पहले डे का पहला हाफ भी मिस हो गया, तो भी you can enter. And what psychologically it did to me was it removed a lot of pressure from the first half an hour. Because you are always under this ना कि भाई 1 मिनट या 1 मेरा eyeball भी छूट गया, I'll end up missing the whole move of it.
The moment you start doing this and you see कि भाई पूरा 6 घंटा है मेरे पास to find out something or the other, that relieves a lot more of pressure from the first half an hour. So you're not Yeah, so frantic at that time. You can आराम से chill out and yeah, Yeah. So I just wanted one thing, right? So like a lot of people see 75 minutes or 1 hour chart, Hmm. right, for entries. Like Motherson is one right now. Hmm. Okay, you want me to take that? Okay. किस पे hourly पे लो सिद्धार्थ? Yeah. हाँ, hourly पे या 75 minutes पे किसी पे. This is hourly. हाँ. So like daily पे already it has already spent like 5-6 days Hmm. going sideways. Hmm. Uh, like what is your experience of entering on daily, like hourly or 75 sort of for stocks Okay. like this? You found it out perfectly. अजी देख, आज का दिन ठीक है would have been perfect pivot. यहाँ पे everyone would have wanted to enter. नहीं है, मेरा पोजीशन है इसमें तो. नहीं That's नहीं, जनरली बोल रहा हूँ, अगर मेरे को नया एंट्री लेना है यहाँ पे तो सब लोग कूदने जाएंगे टाइटनेस देख के. सम पीपल व्हाट दे मे एंड अप थिंकिंग इज यहाँ पे 10 डीए में जाएगा तो और 2-3 दिन टाइटनेस आ जाएगा. दे विल स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम से टुडे व्हाट मंडे राइट, थर्सडे फ्राइडे से वो लोग कूदना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज द 10 में विल कैच इट. 5 स्टार सेटअप. ठीक है, 5 स्टार सेटअप होगा. ठीक है, अभी देख. नाउ यू वर टेकिंग ऑन द 1 hour. ठीक है, ये देख. नाउ दिस is the whole trap area. Everyone who is going to look at tightness is going to keep on getting trapped here. ठीक है, तुम क्या करोगे, यहाँ पे पिवट डालोगे, यहाँ पे पिवट डालोगे. ठीक है, बट बियॉन्ड द पॉइंट इफ यू सी अ मोमेंटम ऑन दैट पर्टिकुलर डे. अभी मोमेंटम कैसे फाइंड करोगे सिद्धार्थ? ठीक है, तुमको कहीं ना कहीं पे लीनियरिटी दिखेगा या स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिखेगा. yeah. Not everything may actually have an R wall also. R wall is not really relevant also in this case. क्योंकि अगर R wall है तो वैसे भी प्राइस में दिखना ही है तुमको. करेक्ट. तो अगर तुमको कहीं ना कहीं पे कुछ प्राइस मूवमेंट दिख गया विच इज अनयूजुअल एंड नॉट सीन इन द प्रीवियस 4 to 5 days, दैट इन इटसेल्फ इज अ चेंज इन कैरेक्टर. Yeah. ठीक है, जैसे आज का ही दिन पकड़ लो. इट हैज बीन कंप्लीटली डेड राइट, द होल डे इज रफली विद इन द सेम रेंज. Correct. ठीक है, कल अगर सिद्धार्थ समझ ले कि यहां से इधर ऊपर जाने लगा. ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स गिविंग योर बेसिंग हियर से अराउंड 170. ठीक है, दैट इन इटसेल्फ विल गिव यू अ गुड पिवट फॉर द फर्दर मूव. It may follow through or not follow through, but you have gotten a better entry point than what you had even in the previous 2 days. Yeah, actually I tried entering on 12th का जो ये वाला था ना, ग्रीन वाला कैंडल, 12th अगस्त. देखना यहाँ पे मोमेंटम है ही नहीं ना, लेकिन वो नहीं, एक्चुअली सुबह ऊपर गया था फिर वो स्क्वाट कर गया. कब, 12 तारीख राइट? हाँ, 12 तारीख को. Yeah, this was still valid. I couldn't. Yeah, you can still take it. यहाँ गया था फिर वो इमीडिएटली But this would still be a break-even entry ना अपने मेथड. या मतलब मैंने like, थोड़ा ये इसके हाँ बाद ठीक है, but valid. I can understand. स्मॉल लिया है. But the best ones जैसे है ना, the ones we were seeing right, which were very linear in the day. हाँ, करेक्ट. अभी सब कुछ नहीं आता है. इफ यू आर रियली बायस्ड एंड वांट टू फोर्स एन एंट्री इनटू समथिंग, सिद्धार्थ तुम्हारे मेथड पे बहुत बार ऐसा लीनियरिटी नहीं आएगा. ठीक है, बट यू विल ऑफन फाइंड दोस आल्सो. जैसे वन स्टैंडर्ड को अभी जो पूछा था ना प्रयाग ने, इसलिए बहुत अच्छे. नाउ सी हाउ लीनियर इट इज ड्यूरिंग द डे. And I was very surprised when I started doing this exercise also that how come no one else has actually pointed this out. तो ये लास्ट 6-8 मतलब काफी दिनों से है ना प्रयाग. How my frequency has actually also increased is not by end of day scans. It is by day scans. So Yeah. many a times अभी जैसे workshops चल रहे हैं and all, मतलब we finish by 11:15, 11:30 with the baby and all, I may not be able to wake up on time. ठीक है, so I'm okay. I'll have my end of day scans. ठीक है, weekly में कर दिया, but I'll after that scan during the day and end up finding stuff. Yeah. And sometimes these intraday ones, they also give you good risk reward also, right? हाँ मतलब what do you mean? As in, जब आप उसका entry लेते हो, sometimes the base is not as big as, and I don't know, मतलब maybe that is a mistake I'm making because I wasn't taking the 1.5% from the high of the day. तो कुछ चीजों में मतलब I saw that, and this is only when I was going through the charts, right?
कि सपोज आपने फर्स्ट वाला बेस लिया इस पे, दिस विक्रम सोलर वाला, Okay. and I don't know where you would ideally keep the stop loss. I was keeping at the base, which was probably a mistake. यहाँ पे थोड़ा और डीप भी ले सकते हैं, हाँ वो ग्रीन के नीचे, राइट? आइडियली स्टॉप लॉस उधर तक ऋषि जहाँ पे तुम्हारा एंट्री का थीसिस खराब होगा. राइट. तो सपोज इफ दिस हैपेंस, ओके, हाँ. यहां से इमीडिएटली नीचे आने लगा, हम्म. ठीक है, तुम आइडियली क्या प्ले कर रहे थे? यू आर प्लेइंग दिस मोमेंटम एंड दिस टाइटनेस. या. द मोमेंट दैट स्टार्ट ब्रेकिंग, योर एंट्री हैज बिकम रॉन्ग. हम्म. ठीक है, नाउ टू थिंग्स, इधर यू एंटर, एग्जिट द फर्स्ट और एग्जिट द लास्ट. राइट. ठीक है, तो एग्जिट द फर्स्ट किधर आएगा? यहाँ पे आएगा. एग्जिट द लास्ट लेना है तो यहाँ पे लूंगा. हाँ, आई मीन आई मुझे थिंक भी मैं लास्ट बीच लेना में है तो कहीं जैसे हमजा कर बोल रहा रहा था, था डे लो पे रखो, बट और देन दैट विल बी टू वाइड. या दैट्स टू वाइड. So then you And I, balance it out. हाँ, but I think even in that balance, I was keeping it maybe too tight and getting chopped out a lot also. So अभी टू टाइट दो कब आएगा ऋषि? ठीक है, वन इज टाइटनेस ऑन द बिफोर यू एंटर योर इनिशियल स्टॉप लॉस, दैट इज वन टाइटनेस. करेक्ट. सेकेंड टाइटनेस इज हाउ यू ट्रेल इट. Yeah. ओके, यू आर, अगर तुमने बहुत जल्दी ट्रेल कर दिया ना, वेरी लाइकली यू विल गेट स्टॉप्ड आउट हियर. Yeah. ओके, सो लेट द फर्स्ट पुल बैक हैपन. तो मतलब इनिशियल बर्स्ट आ गया ना, अगर इनिशियल बर्स्ट यहीं से अगर 3-4 चला गया, यू आर एट अ गुड स्पेस. Okay, but many a times this after the initial burst, your first pullback is very common. Yeah. If this pullback materializes, if it follows through, okay, then this breakout bar is actually stronger than this breakout bar. Yeah. Then you have a good thesis to raise your stop loss up further. हाँ. ठीक है, तो एक छोटा स्टॉप लॉस जाता है ना ऋषि, 0.2 0.3, वो ले लूं, उसे फर्क नहीं पड़ेगा. तो हाँ. ठीक है, जब हम लोग टारगेट ले रहे थे ना लेस देन 1%, उसमें तुम्हारा फुलफिल हो जाएगा. हाँ. रेट नीचे जाएगा, बट दैट विल बी अ रेयर सर्कमस्टेंस. Got If it. you are entering well, most of the times you will get in a decent enough initial burst. Yeah. ठीक है, अनुराग अगर मैं यहाँ पे पूरा कोई भी तुम्हारा एकदम स्टैंडर्डाइज्ड एंट्रीज लेता हूँ ना, ये ठीक, ठीक है, एवरीथिंग वुड हैव एन एमएई ऑफ वेरी क्लोज टू 0. Yeah. You can see this. I'll just keep on going down the list. एक अच्छा, you showed me a few also, right? ये देख, see vectors. Back. Are there cases where you take the entry based on intraday chart but keep your stop based on daily chart? Then won't it become too deep? No, Suppose I'll मैं give यहाँ you an पे लेने example, right? जाता Like हूँ. right now, I'm in this live trade in the US, Dell Technologies. Good day. Yep. Now I want to position trade this, right? If you draw a pivot from that where the base started, यहाँ से हाँ, हाँ if you ठीक see है. what it did was it was basing throughout as the US market was correcting. हम्म. Very high RS, didn't go down, stayed in this flat base. Then it broke out of it. Today it has come down to retest the top of that pivot. Okay. It tested the top and it started going up. That's where I bought it. So it's an intraday entry So you have gotten it here. at 4 something, 474 के आसपास मार लो. कब आज लिया है? आज on this red bar, Okay, let me take it. anticipating a bounce. So you took it. क्या price बोला आपने? 474. Okay. Right. So This here, you third took it green here. bar पे it हाँ. bounced from here, right? Hmm. Now I have a very good day level stop loss because it is at the top of that base, which it has bounced on. I can keep that, or I can bring it to break even, or I can start trailing also. How will I make a decision based on this? So I'll tell you one thing. अभी तुम्हारा जो high of the stop loss, ये जो base ले रहे थे, if you're actually using that concept of resistance becomes support, right? Yeah. ठीक है, तो यहाँ पे है तुम्हारा say around 465 levels. On that पिछले green bar का top, so it's हाँ. at 470 के आसपास मान लो. हाँ. तो पिछला green bar ये वाला बोल रहे हैं. हाँ. Yeah. So that's where it started. Okay, now I'll tell. Now 470 is what? Your roughly day low. My day Yeah. low for me has a lot more relevance than the high which was created 3-4 months back. Yeah. So here, और ये केस में if I'm taking a reversal, right? If this Hmm. starts squatting, ठीक है?
डे चार्ट पे मतलब क्या होगा पता है, तुम्हारा इंट्राडे मोमेंटम लूज हो रहा है, Yes. so the stock may still end up succeeding but you will get shaken out because your entry has failed. Huh, so I So can continue to keep it at day low, which is also the base yeah, top. so your risk appetite, I would my kind of execution, it would be at cost plus. You can prefer to keep it at day low if you want to risk more. Hmm. डे लो का भी रैशनल क्या है, दैट द लास्ट बायर ऑफ द डे को भी मरना पड़ेगा तभी मैं एग्जिट करूंगा करके, वही Correct. लॉजिक है ना। ठीक है, Correct. बट वो लास्ट आदमी मरना ही वीकनेस का साइन नहीं है। देयर आर मेनी पीपल हु हैव डाइड बिफोर। That is true. Yeah. Yeah. एक्सरसाइज क्या है इसमें? Size. It's 15% size. अगर आप बुलिश ही हैं जैसे थीसिस है डेल में भी, तो अगर आप हाफ कॉस्ट पे निकाल दो, हाफ स्टॉप लॉस हिट कर लो, यू कैन ऑलवेज ऐड बैक नो टुमारो इफ इट गोज अप. Asking me? हाँ, so he's या asking why don't you sell half? Huh. So what I'm trying to do in the US, because I don't want to stay up late and not trade actively throughout the day and manage trades, etc., is more of position trading, right? So I'm trying to buy either the base breakout or as it starts going up on the right hand side of the base, right? Like my other position is like Micron or Palantir was a EP entry. So there I'm buying and I want to hold it for a few weeks, right? So, which is where I'm also okay to stay at this nice stop loss level. So, India, I will use up my energy to do all this intraday stuff, but US, I just want to nail really good entries and then stick with them. See this, literally every chart I go and literally looks the same with it. Yeah. तो इस टाइप का ये जो है ना, दिस linearity, say for example, then creating a base, then breaking out, and then being linear during the day. All of these are very common. You do this for 1 week, you will start seeing everything the same beyond the point. Yeah. How do you actually execute it in the system from a trailing stop loss point of view? सेम वे, जैसे नॉर्मल ईपी ट्रेड्स लेते हैं। अब मेरा पहला अगर ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्क क्या होता है पता है, इफ आई टेक इट हियर राइट, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑलरेडी इन मोमेंटम इन द डे राइट, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉलो थ्रू टू कम लाइक दिस, सो आई ट्रेल इट द सेम वे। No, no, I'm talking about pure execution. जैसे आई You'll पुट put इन a लिमिट ऑर्डर। no, क्या but क्वेश्चन it's है? going up na, continuously. You're trailing it with a moving average. या ट्रेलिंग इट विद अ मूविंग एवरेज। सो अब नहीं तो अगर पूछ रहे हो कि कंटिन्यूअस में ट्रेल करते रहूंगा, वैसा नहीं, आई वोंट बी ऑन द स्क्रीन, बीच बीच में जो ऐसा कुछ लेवल्स के नीचे डाल के रख दूंगा या अलर्ट्स डाल के रख दूंगा, Okay, got it. बिकॉज यू कांट कीप ऑन ट्रेलिंग इट कंटिन्यूसली ना, वो इम्प्रैक्टिकल। Because now I think Zero has launched a trail by some percentage वो away. परसेंटेज फैक्टर है ना, बट एन एनए Yeah, नॉट नेसेसरीली मैच अपॉन दैट। yeah. Got of it. useless. वो अपने लिए यूजलेस है, बट जिसको नहीं पता हाँ यूजफुल है। हाँ. Yeah. ठीक है। चिराग सर इस एक पैर. ओके ओके विख्यात बोलो. मैं ये पूछ रहा था बस कि इसमें डेली का बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट नहीं देखना है ना, मतलब सिर्फ इंट्राडे पे ही देख रहे हैं अपन। नहीं देख रहे हैं, बट यू आई वुड प्रिफर द इंट्राडे कॉन्टेक्स्ट बिकॉज आई एम प्लेइंग द प्रेजेंट। बहुत बार अगर तुम्हारा मर्ज हो गया ना, द डे कॉन्टेक्स्ट एंड द इंट्राडे कॉन्टेक्स्ट, इफ इट इज मर्जिंग, हम्म ठीक है, टेक इट, बट दो सर्कमस्टांसेस आर फ्यूअर। ठीक है। और किसी सिनेरियो में अपने को ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा एक्सटेंडेड था और फिर अभी आज और ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ। हाँ, आज ही ये देख लो ना, अभी ये जो एग्जांपल्स देख लेते हैं मोल पेन वाला और ये सब, ये वैसे ही है ना। ये देख, ये आज का इंट्राडे चार्ट है, बहुत लीनियर है हम विख्यात। हम्म ठीक है, बट दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली योर डे 3 ऑफ द मूव। हाँ, ठीक है। ठीक है, सो इसमें ये वो कर जो सकते हैं कि रिटेल वर्सेस होलसेल भी ले रहे हैं ना, द रिटेल वर्सेस होलसेल इज ऑल्सो नॉट स्टैटिक राइट। यू मे बी होलसेल ऑन द
intraday level but retail on the day level, but it may still work for you. हम्म हम्म हम्म, ठीक है। ठीक है, पूरा मोमेंटम ट्रेडिंग का रैशनल क्या है कि तुम जहां से बायर्स आ रहे हैं उसके पहले लाइन में खड़े रहो। ठीक है, फिर वो जब हम्म निकलते जाते हैं तुम उनके साथ निकल जाओ। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि तुमको पहला आदमी होना है, वही तो बोलता है। क्योंकि कंटिन्यूअसली ट्रेन में लोग आते चढ़ते उतरने वाले हैं। यू गेट इन एट एनी पॉइंट, गेट आउट एट एनी पॉइंट, यूल स्टिल मेक मनी। द पॉइंट हम्म इज नॉट टू लूज द मोमेंट।